welcome is extended to the Honourable Attorney General and the Minister for Public Enterprises. Sir. Good morning, ladies and gentlemen. It gives me much pleasure to be here this morning. Of course, we would like to be under better circumstances. As you know, and is highlighted by the Chairman of Yaqara Pastoral, this matter obviously was raised with us via text message to the Honourable Prime Minister sometime in September last year by one of the farmers in this area. We subsequently then, of course, asked Yaqara to carry out some investigation. They did carry out some investigations. We understand that then some of the breaches in the fences did continue. We then also discussed the idea of compensation. In some of the correspondence that we received and some of the complaints we received, the individual complainants said to us, we don't want compensation, but just fix up the fence so the cattle don't come through. In fact, a recent letter that we received a copy of only about a week ago, in that same letter it also did say that, we don't want compensation, just fix up the fence. What we are doing today is we are doing both. We are essentially telling you today through the Yaqara Pastoral Company Limited, as through the chairman, that the fences are being fixed. There will be more patrols being put out. And of course today we are paying out compensation to those farmers who assist. But let me also tell you, these things take time. The reason why they take time, ladies and gentlemen, is because we have to carry out a proper assessment of how much damage each individual farmer actually had occurred. And we of course then involved an independent organization, which is FSC. They have far better knowledge than we do in public enterprise to assess how much damage has occurred. And following an assessment by FSC, we today are paying out compensation to over 100 farmers, 109 farmers actually. There were 5 farmers who had put in claims, but their claims failed because we found that a couple of them did not actually grow any sugarcane at all. And some of them, their farms weren't affected at all. The compensation ranges from $100 to $11,700. This is the range of the compensation that has been assessed. It's been tagged at the price of the cane as was available. I also have to tell you that some of the claims that we received, some farmers, if you calculated and did the extrapolation, we would be paying out $300,000-$400,000 to them. Obviously this was not correct. No farmer, I don't think over here, individual farmer earns about $300,000-$400,000 from the sugarcane farm. So as the chairman said, that we need to take a collaborative approach. You're all neighbors here, and as I mentioned to one of the farmers here, Mr. Shiu Narayan, he's somewhere here sitting here in the audience, that we need to, when these matters are raised, I know some of the issues have been the failings of perhaps the law enforcement agencies. Please talk to us directly. We will address those issues. We've also spoken to Yaqara. They are going to continue to improve their fences. But I must also highlight to you, in the investigations that were carried out by the Public Enterprise and through FSC, some of the cattle that carried out the damage weren't actually cattle from Yaqara itself. There's a lot of wild cattle in this area too. So some of the damages were also caused by the wild cattle. Now, how are we going to assess which sugarcane row was eaten by wild cattle, which was eaten by somebody cattle from Yaqara, is obviously very subjective. So this is why it took some time, and today we are here paying out this compensation. We believe it is timely. Unfortunately, this part of Fiji has been affected also by another issue, which is the drought, as has been highlighted by the chairman. And we completely agree with him that we hope that there's going to be more rainfall because you don't have enough rain as yet. We're hoping in the next couple of months. There's a prediction that we might be facing another very low depression towards the end of February or early March. We hope it's not going to cause too much of a damage, but bring lots of rain.
And that's what we are obviously hoping for. So ladies and gentlemen, I don't want to make a very long speech, but to say to you that we obviously are here to ensure that any damage that has been caused by this company that is owned by the Fijian government will obviously stand up to its responsibilities. It will now be an issue of them fixing up the fences and making sure there's proper enforcement. But we also ask you to also ensure that you are also able to assist them to ensure that this does not happen again. The only way you can do so is by actually collaboratively working with the CEO and the various staff. We will also have a discussion with the staff after this to ensure that they also work very closely with you. If you know that somebody is cutting down a fence, and we have known that there are people who actually cut down fence, some people cut down fence to take the timber away, some people cut down the fence to take the choro, the barbed wire away. It does happen. At the same time, if that notification is given to Yaqara Pastoral, they can adequately address that and immediately. So we don't have a situation again where we're all sitting here and trying to get compensation or you are out of pocket. That's the purpose of getting here today. If I can, which is a bit of a rare thing, talk to you in Hindi also. हमारा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है. बाकी आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ है because जो नहीं compensation हम लोग पे आउट करता है. ये compensation एक one off payment रही. जैसे हम लोग पहले भी बताया है कि यंगारा के भी own problems हैं. ढेर जन उन लोगों के चौवा भी चोरी करे हैं, ढेर जन उन लोगों के फेंस भी तोड़े हैं, और जो ये फेंस जो तोड़े हैं ये हम लोग के सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप लोगों की फर्ज है कि आप भी ये लोग आप लोगों के नईबा है कि आप लोग इनके मिलजुल के काम करो कि देखो अगर कोई चोरी करे रिपोर्ट करो. आज के बाद ऑल्सो हम लोग कमिश्नर पुलिस से भी बात करेगा कि जितना कंप्लेंट्स आए यंगारा से आप लोग से भी जो कंप्लेंट्स आए हैं कि वो लोग इसके एकदम ध्यान धरे और लोग फॉलो अप भी करें. बिकॉज जो यंगारा की कैटल ब्रांडेड भी है, कुछ कुछ जो हम लोग देखा है जो इन्वेस्टिगेशंस में कुछ कुछ कैटल जो डैमेज करे, जो खावे आए कि गन्ना या वेजिटेबल्स डैमेज करे है, वो ब्रांडेड कैटल नहीं है. तो ऑब्वियसली इज वाइल्ड कैटल. बट हम लोग नहीं मानता ये वाला सिचुएशन में फिर पड़े. बिकॉज द आइडिया इज कि आप लोग किसान लोगों ने आप लोग मानता अपन किसानी करें, यू टू डू योर वर्क, और आप लोग इंटरप्शंस नहीं मानता है. तो हम लोग की भी गवर्नमेंट की भी ये ऑब्जेक्टिव है. जैसे अभी हम लोग के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अभी 2 रोज भी लंबासा में अनाउंस करी से कि $2 पर टन एडवांस पेमेंट मिली आपकी. आज आप लोग के एडवांस पेमेंट मिले हैं. और क्या एडवांस पेमेंट मिले हैं बिकॉज हम लोग जनता है कि आप लोग की भी तकलीफ है ड्राउट के कारण और मदद भी मांगे है आप लोग. तो इसलिए तभी से हम लोग आप लोग के वी आर ऑलवेज थिंकिंग कि कौन वे से हम लोग हेल्प कर के चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे जो हम लोग पैसा भी पे आउट करता है ये टैक्स पेयर्स पैसा भी है. तो हम लोग की जिम्मेदारी बने हैं कि जो टाइम हम लोग पे आउट करी बस आँखी मूंद के नहीं पे आउट करी. ऐसी चीज़ में वक्त भी लगे हैं. कुछ कुछ जन तो बहुत एग्जेजरेटेड क्लेम्स भी करी. जैसे भी अभी इंग्लिश में बताया क्योंकि जन तो ऐसा क्लेम करी से कि हम लोग उनके $300,000-400,000 एक एक फार्म पे देता. ऑब्वियसली एक किसान उतना तो नहीं कमाए हैं. तो उसमें बात में सच्चाई भी रहे ना. द बेस्ट थिंग इज इफ एवरीबॉडी इज ऑनेस्ट अबाउट इट. हम लोग नहीं बोलते आप लोग डिसऑनेस्ट है, बट कभी कभी आदमी बोला रे मौका मिले क्लेम कर ली जाए. गवर्नमेंट यहाँ पर है आप लोगों की मदद करे के लिए. हम लोग मतलब आप लोगों के ऑब्वियसली आवाज़ भी सुने. कभी कभी अगर कोई के आप कंप्लेन करा है कोई सुने नहीं है. हम लोग बहुत ओपन गवर्नमेंट है. हम लोग के ऑफिस में हमारे ऑफिस में ढेर जन पहुँचा रहे हुए एवरी डे. हमें आदमी लोगों के टैक्स भी करे. जो प्राइम मिनिस्टर है कभी कहो ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा जो उनके से भट से टैक्स कर दो और फ़ोन भी कर दे रिस्पॉन्ड भी कर दे. और गवर्नमेंट और तरह तरह से आप लोगों की भी मदद करे है. फ्री एजुकेशन है और फ्री वाटर जो जगह वाटर रेटिकुलेटेड सिस्टम है. फ्री मेडिसिन है. लड़कन के टेक्स्ट बुक्स है फ्री. और ढेर चीज़ भी इलेक्ट्रिसिटी के भी हम लोग सब्सिडाइज भी करता है. जो जगह इलेक्ट्रिसिटी हम जनता कोई जन के लिए यहाँ पर जो है रेटिकुलेटेड वाटर सिस्टम नहीं है. बट ये हम लोग के जो प्रोग्राम है इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स टू इंश्योर कि वाटर सिस्टम्स भी राइट रहे, इलेक्ट्रिसिटी भी राइट है.
तो मन तो आप लोग ओवरऑल सोचो कि कौन सी इकोनॉमी में होए है, कौन सी गवर्नमेंट करे है, एक बात पे लेके बस तुला नहीं मांगे रहे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कि कौन चीज है हम लोग की कंट्री में। तो हम लोग माफ़ी भी मांगता है आप लोग से कि आप लोग के नुकसान भे हैं और ये नुकसान नहीं चाहिए हो फिर से। तो हम लोग यंगारा से बात करा है कि जितना उनके फेंसेस है टू फिक्स अप, और बाद में उन्होंने मतलब ये सब चीज़ होए। हम लोग माफ़ी मांगता कि ये प्रॉब्लम भे है, और इसके बाद भी हम लोग मानता कि आप लोग के संगे मिलजुल के काम करें। FSC के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हैं, केन ग्रोस काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए, परमानेंट सेक्रेटरी फॉर शुगर भी यहाँ पर है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव लोग यहाँ है, काय लोग यहाँ पर है बिकॉज वी टेक दिस थिंग्स वेरी सीरियसली। अगर कुछ टाइमिंग में भी गड़बड़ हुई है, आप लोग एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट कर पाया है, उसके भी माफ़ी मांगता है, बट टाइम लगा है बिकॉज हम लोग मानते हैं प्रॉपर असेसमेंट करें। तो आज जानो असेसमेंट करे के बाद आज आप लोग के चेक मिले हैं। कुछ कुछ जन यहाँ पर अभी हमें बतावा गए इससे पहले जो नाई से यहाँ पर उन लोग बोले पावर ऑफ अटर्नी लेके आई से, वह 10-15 जन यहाँ पावर ऑफ अटर्नी लेके आई से, वो वाला चेक करे के पड़ी कि उन लोग के पूरा हक है कि नहीं पावर ऑफ अटर्नी के नीचे। तो जन के आज चेक नहीं देवा जाए, जब ले वो पूरा चेकआउट हो जी तब हम लोग बोला चेक मिली, और सब जन जो यहाँ है उन लोग के ऑब्वियसली चेक मिली। तो ठीक है, हम लोग जैसा टोल्ड अर्ली ऑन कोई और एक फार्मा के भी कि हम लोग के भी फ़ोन नंबर्स भी अवेलेबल है, आप लोग हम लोग के को डायरेक्टली कॉल करें, हम लोग ये आप लोग की मदद करेगा। बट वी ऑल नीड टू बी एबल टू वर्क टुगेदर टू इंश्योर कि फिजी के फ्यूचर भी ब्राइट है। देयर इज ऑब्वियसली सर्टेन थिंग्स जो हम लोग के हाथ से बाहर है। हम लोग पानी तो नहीं सो गिराए, अगर बारिश नहीं है तो हम लोग के आउट ऑफ कंट्रोल है। तो गवर्नमेंट के फर्ज बने हैं कि मेक श्योर कि पानी डिलीवर है आप लोग के डेली लिविंग के लिए, ये सब चीज़ के हम लोग के कंसर्न है। तो जैसे हम लोग बोला है कि वी वांट टू वर्क टुगेदर विद यू, और यंगारा भी इज गोइंग टू डू द सेम थिंग। यंगारा के आप लोगों की तो जनता है कि ढेर साल से अभी तो ये चेयरमैन अच्छा चेयरमैन ऐसे, पहले भी तो यंगारा बहुत अच्छा से चलत भी नहीं रहा, कुछ मैनेजमेंट भी कुछ खामी भी रहा, बट अब हम लोग इम्प्रूव हुए हैं, अब लोग के डिविडेंड भी पे करे हैं, और आज जो पैसा आप लोग के कॉम्पनसेशन मिले हैं इज कमिंग फ्रॉम यंगारा's बैंक अकाउंट। तो गवर्नमेंट एज ए शेयर होल्डर उनके डायरेक्टिव दिस है कि ये कॉम्पनसेशन पे करो after the assessment by FSC. So ladies and gentlemen, I basically said in Hindi what I said in English, but also to say that we need to take a collaborative approach in terms of dealing with these matters. We obviously don't want to be here again dealing with such a matter. We need to address the problem. We need to address the cause. In other words, prevention is better than cure, and we hope that that's what's going to take place. We obviously are concerned about the day-to-day issues that face because of the drought issues that have affected the farmers, and we will work together with them. So ladies and gentlemen, with those few words, I'd like to thank you very much for your presence here this morning, and I now have much pleasure to carry out the payments. I also want to say to some of the farmers that there's a lot of interest now being shown in the what we call the Nosori Bar corridor, because ये जो पूरा रीजन है हम लोग इसके टैक्स फ्री कर दिया है कि कोई अगर आके यहाँ नवा बिजनेस सेटअप करी वो लोग टैक्स नहीं पे करी। ये रीजन से हम लोग ये जोन टैक्स फ्री जोन किया है, बिकॉज यहाँ पर बहुत कमती इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो कुछ जन कुछ इंटरेस्ट भी शोन करी से कुछ फैक्ट्री सेटअप करे के, बिजनेसेस सेटअप करे के। अब तो जाना रास्ता तो अब पूरा राइट हो गए हैं ऑल द वे टू सुबह किंग्स रोड में। तो there's a lot of opportunities. आप लोग भी कुछ ध्यान भी देना कि there may be some opportunities, and this is why we're saying that we want to be able to work together with you. So thank you very much, and I'd like to now get Lisa to perhaps make the announcements for that. Naka, thanks.